A Slumber Did My Spirit Seal is a poem written by William Wordsworth in 1798 and published in 1800 edition of Lyrical Ballads. It is usually included as one of his Lucy poems, although it is the only poem of the series not to mention her name. The poem is a mere 8 lines long, 2 stanzas. एक थपकी ने मेरी आत्मा को सील कर दिया 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई एक कविता है और लियोरा बैलेड्स के 1800 संस्करण में प्रकाशित हुई है। यह आमतौर पर उनकी लूसी कविताओं में से एक के रूप में शामिल है। हालांकि यह श्रृंखला की एकमात्र कविता है जिसमें उनके नाम का उल्लेख नहीं है। कविता मात्र 8 पंक्तियों की लंबी है, 2 श्लोक। एक स्लम्बर ने मेरी आत्मा की मुहर लगाई वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स में से एक है, जो मुख्य रूप से लूसी नामक एक युवती की मौत पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि वह इस कविता में अनाम नहीं है डंडा। कई विद्वानों और साहित्यिक इतिहासकारों ने लूसी के रूप में उपलब्धियों की पेशकश की है लेकिन उसकी असली पहचान एक रहस्य है। कविता में केवल 2-4 पंक्ति वाले छंद शामिल हैं, और फिर भी इस संकीर्ण स्थान में बहुत कुछ होता है। हम वक्ता की प्रतीति को देखते हैं कि न केवल इस युवा महिला की मृत्यु हो गई है, बल्कि यह भी है कि एक खूबसूरत दुनिया में बुरी चीजें हो सकती हैं। पहले श्लोक में वक्ता सहज रूप से अनभिज्ञ है कि उम्र महिला को छू सकती है, लेकिन जब उसे 1 और 2 के बीच मृत्यु हो जाती है, तो उसे जल्दी से कठोर सबक सिखाया जाता है। छंदों के बीच मृत्यु को छिपाने का विकल्प दिलचस्प है, क्योंकि यह प्रतीत होता है कि स्पीकर अचानक हुए नुकसान के साथ साथ होने वाले दर्द को स्पष्ट करने में असमर्थ है। दूसरी ओर, कविता बोलने वाले की मासूमियत के बारे में, युवा महिला की शक्ति के बारे में उसके विश्वास से कम हो सकती है। वास्तव में वह उसे अपने मन में एक देवी में उम्र और मृत्यु दर से अछूता बना हुआ लगता है। उसे सदा जवान बनाए रखने की यह इच्छा युवती के लिए बोलने वाले की भावनाओं के लिए एक वसीयतनामा है। दूसरे श्लोक में वर्ड्सवर्थ महिला की वर्तमान स्थिति का एक भयानक विवरण प्रस्तुत करता है। वह अंधा और बहरा है, पूरी तरह से उसके आसपास की दुनिया में लेने में असमर्थ। यह वर्ड्सवर्थ कविता में एक विशेष रूप से दर्दनाक विचार है, क्योंकि वह आमतौर पर इंद्रियों का अनुभव करने पर केंद्रित है। स्पीकर ने यह भी उल्लेख किया कि वह अब गति या बल के बिना है। यह निश्चित रूप से सभी मृत लोगों का सच है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहने से स्पीकर पाठक को उस तरह की कल्पना करने में मदद करता है जिस तरह से एक बार युवती थी, जीवन और जोश से भरी हुई। अंतिम 2 पंक्तियों में वक्ता पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी युवती का वर्णन करता है। वास्तव में वह पृथ्वी का एक हिस्सा बन गई है, इसके साथ लुढ़क रही है, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन बदल जाती है। कविता की अंतिम पंक्ति विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि वक्ता चट्टानों और पत्थरों दोनों को सूचीबद्ध करता है, जो अनिवार्य रूप से समान हैं। यह हो सकता है कि वह ग्रेवस्टोन और सामान्य चट्टानों दोनों को संदर्भित करना चाहता है। वैकल्पिक रूप से स्पीकर का इरादा पेड़ों की तरह जीवित चीजों, जो केवल एक बार उल्लेख किया गया है, पर पृथ्वी की मृत चीजों पर जोर देने का हो सकता है। एक थपकी ने मेरी आत्मा को सील कर दिया एक गाथा गीत है। हालांकि एक बहुत ही कम श्लोक में एक एबछंद योजना का अनुसरण किया गया है, और पहली और तीसरी पंक्तियां आयम्बिक टेट्रामेटर में हैं, जबकि दूसरी और आगे की पंक्तियां आयम्बिक ट्रिमर में हैं। A Slumber Did My Spirit Seal is a poem written by William Wordsworth in 1798 and published in the 1800 edition of Lyrical Ballads. It is usually included as one of his The Lucy poems, although it is the only poem of the series not to mention her name. The poem is a mere 8 lines long, 2 stanzas. Background of the poem.
During the autumn of 1798, Wordsworth travelled to Germany with his sister Dorothy and fellow poet Samuel Taylor Coleridge. From October 1798, Wordsworth worked on the first drafts for his Lucy poems, which included Strange Fits of Passion Have I Known, She Dwelt Among the Untrodden Ways and A Slumber. In December 1798, Wordsworth sent copies of Strange Fits and She Dwelt to Coleridge and followed his letter with A Slumber. Eventually, A Slumber was published in the 1800 edition of Lyrical Ballads. Unique amongst Lucy poems, A Slumber does not directly mention Lucy. The decision by critics to include the poem as part of the series is based in part on Wordsworth's placing it in close proximity to Strange Fits and directly after She Dwelt in the Lyrical Ballads. Poem. The Lucy poems fall within a genre of poems that includes Robert Herrick's lamentations on the death of young girls. Written in spare language, A Slumber consists of 2 stanzas, each 4 lines. The first is built upon an even, soporific movement in which figurative language conveys the nebulous image of a girl. The poem begins. A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. The second stanza maintains the quiet, even tone of the first, but serves to undermine the former's sense of the eternal by revealing that Lucy has, by the time of composition, died. The narrator's response to her death lacks bitterness or emptiness, and instead takes consolation from the fact that she is now beyond life's trials. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course, with rocks, and stones, and trees. Themes. Lucy is an isolated figure in which the narrator responds to her death. The beginning of the poem, according to Wordsworth biographer Mary Moorman, depict a creative sleep of the senses when the soul and imagination are most alive. This idea appears in other poems by Wordsworth, including Tintern Abbey. The space between stanza 1 and stanza 2 depicts a transition of Lucy from life into death. The 2 stanzas also show that Lucy, a being connected intrinsically to nature, dies before she can attain her own distinct consciousness apart from nature. However, as literary critic Jeffrey Hartman explains, growing further into consciousness means a simultaneous development into death, and not growing further also means death, animal tranquility, absorption by nature. The lifeless rocks and stones described in the concluding line convey the finality of Lucy's death. Boris Ford argues that within the second stanza, as the dead girl is now at last secure beyond question, in inanimate community with the earth's natural fixtures. Coleridge, in a letter to Thomas Poole, states, "Whether it had any reality I cannot say. Most probably, in some gloomier moment he had fancied the moment when his sister might die." Coleridge's reference was to the state of Lucy as dying or dead within the Lucy poems as a whole and to A Slumber in particular. Although Lucy cannot be established, it is certain that there is a relationship between the name Lucy and Wordsworth's sister within Wordsworth's poetry, since Wordsworth used the name Lucy in reference to his sister in many poems, including The Glowworm and Nutting. The problem with relating Lucy to Dorothy is in explaining why Dorothy would be presented in a state of death. Dorothy was alive during the composition of the poem, and presented as alive in other Wordsworth poems like The Prelude. As such, the poems are most likely not about Dorothy but just a continuation of a theme in general. Lucy is presented as character connected to nature who exists in a state between the spiritual and human, similar to a mythical nymph. However, she represents a state of consciousness and exists within the poem as part of the narrator's consciousness. The first stanza describes the narrator transcending human fears because his feelings towards an immortality connected to Lucy, a feeling brought up in Strange Fits. These feelings of immortality continue in the second stanza because, though dead, she is separated from him by death. She is always a being connected to nature, and the narrator slumbers because his understanding of Lucy is not conscious. Since Lucy exists on an unconscious level for the narrator, he cannot grasp her until she has died. As such,
He experiences the events as one who is woken from a dream without an understanding of what the dream entailed, and is not able to feel shock at learning of her death. This is thematically represented in the poem by placing Lucy's death between the two stanzas.